Hello everyone. So let me check that is it getting recorded or not. Yes, it is. So this was a question asked by someone in the group, and I was not well. Actually, I'm not well right now also, but I'm trying to make some good recorded videos so you can watch them on the channel also. The channel link you'll get in the description of this particular channel, that is YouTube channel. So this let's move to this particular problem. It's a good problem in a way that there are few things which you need to actually keep in mind while doing problems like this. So always remember, means जब भी हम rolling पढ़ते हैं तो always there is one very good thing, because since the chapter and the topic is bit on a typical side, और समझने के लिए थोड़ा सा it's a bit harder because there are things which gets complicated here. So always remember, in rolling and rotation and all sort of things, जो भी फ्रिक्शन का एस्पेक्ट होता है दैट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग. सो वो इस क्वेश्चन में इट विल बी वेरी नाइसली क्लियर कि कैसे वो काफ़ी ट्रिकी होता है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वाज एक्चुअली आस्क्ड कि एक सिलेंडर है जिसको हमने ऑलरेडी कुछ इनिशियल ओमेगा दे रखा है 125 radian per second I guess, and it is then kept on the ground as of I am seeing it in the group. Yes, it is placed on a horizontal table which has a friction. Okay, so let us assume that the friction, the cylinder already was rotating in the clockwise direction. So let us first of all study at the very moment जब ये table को touch करेगा तब क्या होगा. So this point on the cylinder is actually trying to move over this side. It's logical that it has a velocity which is in this direction, tangential velocity. So the moment it basically strikes or touches the surface will try providing a frictional force in the direction opposite to this particular वेलोसिटी के डायरेक्शन. एंड एक्चुअली इफ़ यू रियलाइज इन अ वे, अगर आप कभी भी ऐसा करके देखेंगे, व्हेन यू बेसिकली गिव समथिंग अ पुश, जैसे आप किसी भी चीज़ को रखते हैं ग्राउंड पे एंड यू गिव इट अ पुश, तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग बट इट ऑल्सो स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन एंड देन पोस्ट सम टाइम, लाइक आफ्टर सम टाइम स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. सो इफ़ यू क्लियरली ऑब्जर्व, जब आप उसको देते हैं तब वो बहुत तेज घूमता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो थोड़ा आगे पहुंचता है, जब वो अपनी प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है, सो लेट अस बेसिकली नेम दिस एज प्योर रोलिंग का स्टेट. ठीक है. सो जब वो अपनी प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है तो यू रियलाइज, यू ऑब्जर्व वन वेरी गुड थिंग, दैट द फाइनल ओमेगा विथ विच इट इज रोटेटिंग is lesser than the initial omega. It has to be logical. How it is logical? If you see that this friction is the cause which actually momentarily level पे tries to tries to decrease the velocity of this point, and hence in some time you see कि जब फ्रिक्शन होता है तो थोड़ी देर में बॉडी रुक भी जाती है. ठीक है. अच्छा, तो अगर हम इसको अब कॉन्सेप्शलाइज करना चाहें इस प्रॉब्लम को, बिकॉज देखिए सॉल्यूशन इज लाइक वेरी easy for problems, but to understand things deeply is the thing. अगर आप डीपली समझेंगे तभी आप इसको जनरलाइज कर पाएंगे, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स में लगा पाएंगे. तो बी वेरी क्लियर, बिकॉज सी इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्या अप्लाई करने हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सब कुछ बहुत ही सिंपल हो जाता है. तो अगर मैं पहले नेम करूं तो देयर आर ओनली 4 कॉन्सेप्ट्स विच यू कैन अप्लाई इन अ वेरी एनी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम. दैट इज, यू कैन बेसिकली मेक एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए की इक्वेशंस, but always remember this is for center of mass. Although you call it a body, but it is for center of mass. Then you can, what you can do is you can basically make torque equal to I alpha की positions, I alpha की equations. ठीक है. net torque again, again for the net forces या all forces. Then what you can also do is, which is mostly left by most of the students, that you can form the equation of angular momentum. So linear momentum is conserved if you get net external force equal to 0, and angular momentum, angular which is L vector, is also conserved if you find any point जिसके across net torque 0 हो. So this comes out to be जब आपको कोई ऐसा point मिले या पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एफ नेट 0 हो, देन यू कैन कंजर्व दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए तो यू नीड टू फाइंड एन एक्सिस अलोंग विच टॉर्क नेट
is coming out to be 0. It is not necessary कि हर point के across angular momentum conserve हो, but angular momentum is always conserved along the points जिसके along net torque 0 होता है. So in general problems of rolling, angular momentum is a very useful thing. You have already seen, क्योंकि उसमें बस आपको एक point ढूंढना पड़ता है and you need to just identify कि net torque उसके across 0 है कि नहीं. So in this problem, if we see, to find final omega, this is one of the easiest method to basically conserve the angular momentum, because if you look at this point, although with respect to center of mass or with respect to body, if you see, this is the point. अब this is very unique thing. अगर आप देखो, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड दिस इज ऑल्सो, द बॉडी शुड ऑल्सो हैव सम इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, शुड इट? नो, the initial linear velocity is 0 for center of mass. Remember this, it is not in pure rolling. Don't get confused that the v center of mass is not equal to the tangential velocity here. So don't get confused here. So the center of mass velocity is 0 in initial condition, and post some time you see very unique thing that angular velocity decreases, but the center of mass gets some velocity. Let's call it v final. That means there is some force which is giving it the final velocity, and that force is actually frictional force. Now it shouldn't be confusing for you कि ये कैसे हो सकता है कि frictional force is giving the velocity, because it is actually trying to stop this particular velocity, but in that stopping wala scenario it is indirectly giving the velocity. It is a very similar scenario in which जब हम ये वाला केस पढ़ते हैं, जब हम इस बॉडी को खींचते हैं, तो you see that this body also moves because of friction only. तो वो फ्रिक्शन ही होता है जो उसको मोमेंट दे देता है. सो लेट अस चूज दिस पॉइंट फॉर कंजर्विंग द एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज इफ यू सी देयर आर ओनली 2 फोर्सेस और 3 फोर्सेस. लेट से एक होगा आपका mg, दैट ऑल्सो पासेस थ्रू द सेम एक्सिस और पॉइंट. देन देयर इज दिस नॉर्मल रिएक्शन दैट ऑल्सो पासेस थ्रू द सेम पॉइंट एंड सेम एक्सिस. सो ये दोनों इंडिविजुअली 0 टॉर्क देंगे, एंड फ्रिक्शन भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो भी 0.0 टॉर्क देगा. इसका मतलब व्हाट वी कैन से इज अलोंग दैट पॉइंट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम is equal to final angular momentum. This is very important. If you see the initial angular momentum of the body only rotates, so it has only I into omega ka initial angular momentum. And if you see for final body, the body is rotating as well as traveling in forward direction. So you will get 2 components of angular momentum, which are I into omega final plus mvr, which is the linear wala component giving the angular momentum of the body with respect to नीचे वाला point. अब इसके लिए भी there will be many people जिनको ये क्लियर नहीं होगा कि when you are taking this point as a reference and basically you are making it along this point, so if this is your velocity and this is your r vector, eventually it will always comes out to be, ये r वेक्टर आपको नहीं लेना पड़ेगा, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी एम वी इंटू द रेडियस ऑफ द बॉडी. इसको आप खुद सॉल्व करके देखें. दिस इज अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड दैट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस द एंगुलर मोमेंटम is always equal to mv into radius of the body, where v is the center of mass की velocity. Let's solve this particular equation and see क्या आता है हमारा ओमेगा फाइनल. सो हम क्या करेंगे, v को भी r ओमेगा लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा mr square by 2, since it's a solid cylinder so it will be considered as a disk. This will be equal to mr square by 2 into omega plus, इसको v equal to r ओमेगा कर देते हैं. This will be equal to mr square into omega final. Let's calculate omega final from here, which comes out to be, I guess, ये 3 by 2, 2 से 2 cancel. This will be omega initial upon 3. So now we have got the angular velocity, final angular velocity. And why did I choose this step? This is the part where you get good at problem solving. Always remember in these problems, first of all, calculate the angular velocity by conserving angular momentum, because it is much easier to do. If you are not getting something out of angular momentum, then you can go on to conserving energy, because frictional work in scenarios where its pure rolling is 0. In pure rolling scenario, it's 0 because it is not getting displaced in that direction or not slipping along the point along which friction is applied. So only in pure rolling cases it is 0. Now let us make a equation, linear equation for your center of mass. So if you clearly see, the center of mass initially has 0 velocity and finally it has some velocity.
with the acceleration at. Now unique thing here is, यही हमें समझना था कि the friction is here is accelerating causing force for center of mass. So it is V final, which is R into omega final, which is equal to mu g times into T. Now T will be equal to R into omega. Okay, yes, R into omega. So omega is omega initial by 3 upon mu g. So this should be your time after which the pure rolling starts. I guess if there is no, yes, it is right. If you calculate it, it should be somewhere around, R is given to be 0.12 and omega is given out to be 125 upon mu is given out to be 0.15, and your g is 10 and it's 3. You should be calculating this thing. So this is how you calculate the time post which the body starts pure rolling. We have clearly mentioned out here that till this, in this particular region, there are many things to be noticed upon कि यहाँ पे स्लिपिंग प्लस रोलिंग दोनों हो रहा है, बट यहाँ पे आफ्टर दिस सिनेरियो, आफ्टर दिस स्टार्ट्स, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है. सो वी हैव अज्यूम्ड कि वहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है. और जब भी स्लिपिंग प्लस रोलिंग का क्वेश्चन है, ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. आई होप यू डिड गेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाइसली. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क अगेन, बट आई होप आई मेड इट क्लियर अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स along this particular problem.